अच्छा अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें आप क्या करते हैं और आप टूरिज्म इंडस्ट्री से किस तरह रिलेटेड है ठीक हो गया. So, my name is Saad Mohamed. I'm known as the Desi Mountaineer on social media. So I am a mountaineer who climbs mountains, and I also give keynote speeches, and I also dabble into filmmaking and digital content creation. So, having said that, I've climbed Spantik, which is a 7,000-meter peak in the Karakoram near Skardu in Sugar Valley, Randu Valley to be exact. And I have attempted Mount Everest, I've attempted Kashyapram 1, I've attempted Kashyapram 2, and I've been to the advanced base camp of K2. And I've been to a lot of other base camps. So mountaineering, तो ये है. Other than that, I'm an expert on शिमशाल. शिमशाल में मैंने कुछ चोटियाँ सर की हैं जिनको आप कह सकते हैं डिस्कवर किया है, कुछ चढ़ के उनका नाम रखा है. कुछ वैसे ही खिरखरा के वापस आ गए. Last year I was able to make a couple of adventure TV series for Indus News. उनको अंग्रेजी का content चाहिए था, so I was able to make one series of 5 episodes and another one of 9 episodes. एक शिमशाल पे थी, एक ये K2 बालतोरो साइड पे थी. So yeah, so that's what I've done. And other than that, right now I am producing digital media for my own YouTube channel, which is again Desi Mountaineer. So I'm on Twitter, I'm on Facebook, I'm on YouTube, I'm on Instagram. In sub platforms, I'm known as the Desi Mountaineer. I wouldn't say that I am part of the tourism industry. I'm more of a beneficiary, not even a beneficiary, more like I'm a tourist myself. क्योंकि मैं tours तो as such नहीं लेके जाता, तो I have a niche that I go into, which is mountaineering. तो उसमें फिर वो trekking भी cover हो जाती है, सारे destinations भी cover हो जाती हैं. But yes, having traveled for so many years, having trekked since '96. And been climbing since 2006. So I have some opinions about the tourism industry and how it has been affected by the current situation. okay Yes. so my first question would be what do you think Pakistan is going to recover from this situation, especially the tourism industry? Like how long will it take for the tourism industry to recover? See, we were in a very good shape. We were at a point where everyone was jumping onto the bandwagon of tourism with the way the Prime Minister was promoting and Zulfi Bukhari was promoting. At provincial level, they were promoting. In February, I was in South Punjab. That was the first time I ever went to Cholistan. The first time I ever went to Bahawalpur or to Tonsa. So the rally itself was a major event. It was the 15th time the rally was being held. 15 consecutive years say we've had the Cholistan rally. And it was my first time there. और जितनी रंग रलियां, जितना मेला ठेला वहाँ था, it felt like this is something which can grow even more. So yes, we were in a very good position over there. Baki the amount of tour operation companies that were getting properly registered and who were about to launch or who are already there, और जितनी inquiries आ जा रही थी, it was going to be a very good year. Having said that, अब ये जो February से आगे जो phase आया है जिसमें we've had to lock down, the world over has had to lock down. So yes, I see that there will be delays and we have had major setbacks. But अभी हमारा prime season start हुआ नहीं है. मई में लोग शुरू होते हैं, मई में schools खुले होते हैं, छुट्टियां होती हैं जून में या ईद की छुट्टियां होती हैं जिसमें लोग जाते हैं. तो best case scenario is if it settles down within this month, अब 15 दिन और रह गए, so it doesn't look likely that it will settle down by Eid. Naran has already been opened for transportation, but I'm not sure if it is open for tourism right now. So I'm guessing that everything will be delayed by a couple of months. इस साल जो season है आपका वो शायद end of June start हो. Tourism season June में शायद शुरू हो जाए if I'm being very optimistic. But what I would see, what I can see is कि June end तक we will have
some recovery and it will probably go on up till October. थोड़ा delay आएगा, tourism होगा, but what will be affected is the mountaineering season बड़ी heavily, उस पे फर्क आएगा. Then also foreign tourism जो हम expect कर रहे थे, क्योंकि हम तैयारी दो तरीके की कर रहे हैं ना. एक हम local tourist की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा infrastructure हो और हमारे hotels कुछ बेहतर हों, सड़कें बेहतर हों, तो उस पे तो काम हो रहा था, सड़कों पे तो अब भी हो रहा है. होटल्स का काम रुक गया या चल रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाली साइड अगेन इट हैज ओपन, सो मे बी उस पे काम चल रहा है. तो लोकल टूरिस्ट को हम केटर कर लेंगे मे बी विद अ डिले ऑफ अ कपल ऑफ मंथ्स लाइक आई सेड. लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट है, अब ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखते हैं तो वहां पे दे डिक्लेयर्ड कि हाँ जी वी आर ओवर विद द इमीडिएट डेंजर. न्यूजीलैंड इज कोरोना फ्री राइट नाउ. सो इन दो मुल्कों से हमें कितने टूरिस्ट आते हैं, आई एम नॉट श्योर कि बहुत ज्यादा आते हैं, थोड़े ही आते हैं. आई एम जस्ट गेसिंग. ज्यादा बल्क यूरोप से और अमेरिका से आता है. अब अमेरिका में इस टाइम पीक होने वाली है या हो चुकी है, वो जो टर्म है फ्लैट ऑन द कर्व वाली, अभी वो ना तो उन्होंने फ्लैट की है और वो कर्व अभी बनी जा रही है. वो अपने जो है ना, वो क्या होता है वो मैथमेटिकल टर्म्स में, व्हाट यू कॉल इट, द हाइपरबोल. सो वो अभी कहीं पे भी, हाँ, so they're nowhere close to getting this thing under control. वहाँ तो schools भी जून तक भी अभी कोई पता नहीं है, जून में भी खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे या उसके बाद भी खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे. So we are not, I would not expect any tourists from the US till August. Maybe even August is optimistic. Europe में भी Spain is hardly hit. अगर आप देखें माउंटेनियर्स कहाँ से आते हैं, टूरिस्ट कहाँ से आते हैं पाकिस्तान, तो यूके से बहुत ज़्यादा आते हैं. यूके में भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं. स्पेन से बहुत सारे माउंटेनियर्स हैं लेकिन को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान नहीं आते हैं लेकिन को बहुत ज़्यादा नहीं आते. स्पेन में भी हालात गड़बड़ है. देन वी गॉट फ्रेंच माउंटेनियर्स बहुत ज़्यादा हैं. फ्रांस में आई विल नीड टू लुक, आई डोंट थिंक कि वहाँ कोई सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है. सो ये मेजर जगह हैं जहाँ से लोगों ने आना है. तो अगस्त में एज सच क्लाइंबिंग सीजन नहीं होता, खत्म हो रहा होता है क्लाइंबिंग सीजन. सो फॉरेन टूरिस्ट या कल्चरल टूरिस्ट को आप अगर रिवाइवल देखेंगे तो मे बी अक्टूबर में कहीं जाके, क्योंकि टाइम है भी तब भी अक्टूबर नवंबर. सो सीजन में डिले है, वो तो आप लिख ले, डिले तो होगा इवन लोकल टूरिस्ट के लिए, क्लाइंबर्स के लिए खासकर. नेपाल में अगर आपने देखा हो तो प्री मानसून सीजन तो बिल्कुल ज़ाया हो गया. सो आई एम गेसिंग कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकेंगे, जिन्होंने नेपाल प्री मानसून जाना था, इफ द कंट्रीज हैव रिकवर्ड बाय देन, तो वो ज्यादातर नेपाल क्लाइंबर्स ज्यादातर नेपाल जा रहे होंगे पोस्ट मानसून सीजन में, अगर नेपाल खोल लेता है. चाइना में अगर तिब्बत साइड आप देखें तो एवरेस्ट हैज बीन क्लाइम्ड is being climbed by the Chinese climbers. Local climbers चढ़ रहे हैं from the Tibet side. So, चूंकि चाइना में बेशतर areas were declared as corona free, so they went for it. So yeah, that is my take on it. There will be a delay, and we might actually be planning for the next year. Yeah, we'll have to plan for the off-season tourist, more on to cultural and more on to that sort of tourism. So the next question would be, being a mountaineer yourself, how are you dealing with the situation? Because obviously you must have planned something for this summer, and obviously you cannot do all those things which you had already planned. So how are you coping with the situation yourself? So like the past few years, I was planning to climb an 8,000er. पिछले 3 सालों से I've been attempting 8,000ers. तो इस साल भी मेरा यही इरादा था कि I would either go to नांगा पर्वत या ब्रॉड पीक या even Gasherbrum. So I had started pitching to brands for brand partnerships back in December, January से मैं शुरू हो गया था. Even in February I was doing that. But then बिल्कुल break आ गया because of the lockdown. And then again, it would look very insensitive if I'm going to brands asking for money for climbing when there's a bigger problem at hand. They would rather want to work on charitable projects जो भी जिस तरह हालात चल रहे हैं. So उसी तरह कि जून में I don't see an expedition happening. जो मेरा इरादा था कि मैं जून 15 को निकल जाऊंगा और I'll go climbing, I don't see that happening.
I might have to resort to a very late season climb. Maybe August में मैं climbing कर रहा हूँ. Best case scenario में mid July में शायद climbing कर रहा हूँ. That also given कि अगर ऊपर स्कर्दू जो है वहाँ पे they open up for tourists. So that is one situation. The other is कि I would maybe climb in autumn season. फिर that is again contingent on funds. Winter expedition तो बहुत दूर है, उसका मैंने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया, but yes, so worst case scenario, maybe I won't go for an 8,000er. Ideally, I would be going for an 8,000er, but अगर नहीं बात बनती तो maybe I'll go for a smaller peak or for a discovery trip. Maybe I'll go to Snow Lake. I haven't been there ever. तो मैं वहाँ जाके कोई चोटी attempt कर लूँगा, या I might go for a multi-peak expedition in Shimshal, क्योंकि that would cost me less than climbing an 8,000er. So backup plans, yeah, but I'm not really thinking on the backup plans right now. I'm more thinking, okay, let's make the 8,000er possible somehow, even if I have to climb in August. So according to you, it is not going to take so much long to recover so that the people are coming to Pakistan or even the local tourism starts, because we have talked to some hotel owners in the north, and they believe that it will approximately take at least 2 years to recover. They believe that even if Corona ends, people won't come to their places because of the fear. Unfortunately, this year Pakistan was considered as a #1 travel destination, but unfortunately, because of this Corona situation, we cannot make use of it basically. So what do you think? So if I look at I'll quote the example of China again. China ने तिब्बत साइड से एवरेस्ट को खोल लिया अपने क्लाइंबर्स के लिए, क्योंकि वहाँ इतने क्लाइंबर्स थे जो चढ़ना चाहते थे. So what I would see is के maybe yes, foreign climbers नहीं आएंगे, या हो सकता है हम इजाजत ही ना दें given the situation. उनके मुल्कों में कोरोना सेटल होने में कितना टाइम लगता है, because it's not an isolated event ना, कि वो इस चीज से तो नहीं डर रहे होंगे कि पाकिस्तान में कोरोना का इशू है. वो उनके यहाँ भी यही इस तरह का इशू है, यहाँ भी इशू है. सो इट्स समथिंग विच इज कॉमन. तो आई डोंट थिंक कि 2 साल लगेंगे बिफोर दे कम. माउंटेनियर्स एंड टूरिस्ट वुड वांट टू कम. मतलब आप मुझे और अपने आप को देखें तो वी जर्निंग टू गो टू अप नॉर्थ इवन नाउ. मतलब हमारा बस नहीं चल रहा कि हम निकल पड़े. तो आई बिलीव कि जो टूरिस्ट बाहर भी है उसका भी ऐसे ही दिल कर रहा है. बट व्हाट शिफ्ट आई वुड सी इज कि लोकल टूरिस्ट को इजाजत मिलते साथ ही दे वुड गो अप नॉर्थ. फॉरेनर पे हमें इस साल शायद इतना डिपेंड क्या, हम मतलब फॉरेनर को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे इस साल, फ्लाइट्स की वजह से, उनके मुल्कों में रिकवरी रेट्स की वजह से. यहाँ पाकिस्तान में if the climbers you've talked to, if they mean के टूरिज्म इंडस्ट्री रिकवर कैसे करेगी या कितने अरसे में करेगी, तो yes, maybe 2 years it will take it to recover to what it was last year. Or to grow from that point. But tourism रुकने नहीं लगा. As soon as the situation settles down even slightly, I guess के local tourist ने ऊपर जाना ही जाना है. And that is something inevitable. मेरा नहीं ख्याल के इतना कोई hopelessness है इस केस में. And I'm giving it maximum 2 to 3 months. Okay, so in order, because you are obviously a social personality as well, and you have a YouTube channel, so do you think that you can play your role to encourage foreigners to come back to Pakistan soon the situation is over, or there is something you can do to motivate them? Because I think the people like you and the other people who are obviously vlogging and making videos to show the positive image of Pakistan, they can play their greater role. So do you think you can do something like that? हाँ बिल्कुल. See, the content that I made for Indus News last year was all in English, and it showed Shimshal and the other projects showed the Baltoro. तो वो तो काम already हो चुका हुआ. अब it is up to the channel to promote that content on the right platforms. मैं अपनी हद तक जो कर रहा हूँ, I've been making content, fresh content. अब ये South Punjab वाला content, I being a mountaineer, brought an adventure flavor to that. What I'm doing is कि मैं उसको local Urdu English में भी कर रहा हूँ, and then
I'm putting subtitles for the larger audience. कि अगर English speaking audience would want to see that content, so the message is there, but it's not that overtly done या कोई बहुत bluntly done नहीं है. I'm just showing the journey कि मैं ऐसे गया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया. I'm not sitting and doing a message कि नहीं ज़रूर आए. That kind of for me that kind of looks a bit too odd. So yes, what I would suggest, or what I intend on keep doing is to keep making content, because I've got a lot of backlog of stuff that I've shot over the years. So मैं उसको निकाल के edit करके डालता रहूँगा. But maybe I could do more stuff in English for the international audience. Right now, what I'm trying to do is to engage more local audience. क्योंकि we should never be depending on foreign tourism as a sustainable model. कुछ भी हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है, anything can happen. We've seen in Pakistan how things are. Security situation खराब होते कोई टाइम नहीं लगता. कोरोना की वजह से international travel has stopped. So why not work more on the local tourism side? Foreign tourism would be a surplus. That would be something कि आपने locals को handle कर लिया तो foreigner तो आ ही जाएगा. Yeah. What do you think government should do at this time to revive the tourism industry, especially the foreign tourism? I don't think there is much that they can do right now. They were in a very good direction. Start of this year and the last a year and a half, they've been in the very right direction, Pakistan promotion wise. And I did attend a few seminars that worked on it. और उसमें बात I would repeat again what was said was कि we need to work more on how to facilitate the local tourist, क्योंकि आपकी अपनी आबादी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है इस मुल्क की, and if you're able to cater the local tourist with quality tourism, with good places to stay, with good hygienic places to eat, so if you ensure that, तो फॉरेन टूरिस्ट खुद ब खुद आएगा. आई वुड गिव द एग्जांपल ऑफ टर्की पर से. टर्की में बहुत फॉरेन टूरिस्ट आता है एंड इट इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स फॉर टूरिस्ट्स. तो वो अपने टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं. there's a place in the middle of right in the middle of Turkey by the name of Pamukkale. Denizli एक शहर, आप भी बल्कि गई हुई हैं टर्की, so you probably aware of Pamukkale. तो Pamukkale में I was there for a couple of nights back in 2011. So one of the days, the weekend was exclusively for local people. Foreign tourists के लिए था ही नहीं वो दिन. So we never hear of any such thing in Pakistan कि जी आज का दिन सिर्फ पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए. So maybe we need to do more of that, which will then जब दुनिया देखेगी कि यहाँ के लोकल लोग ही पूरे नहीं पढ़ पा रहे या वो ही इतने शौकीन हैं और ये डेस्टिनेशंस, अब तो मतलब दौर ऐसा है ना कि एवरीवन गोज, दे टेक देयर सेल्फीज, दे टेक देयर फोटोग्राफ्स, को वीडियोग्राफर वीडियो बना के डाल देगा, वो होता रहेगा. दैट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ. सो अगर गवर्नमेंट की बात करें, सो गवर्नमेंट विल हैव टू स्टार्ट डूइंग कैंपेन्स वंस द सिचुएशन सेटल्स डाउन. सड़कों पे वो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. होटल्स पे और रिजॉर्ट्स पे जो काम शुरू हुए थे उनकी कंटिन्यूएशन ज़रूरी है. Then the training of the people who come in direct contact with the tourist, let's say hotel managements या hotel staff जो हैं, उनकी trainings पे जो काम हो रहा था, ये जो चल रहे हैं काम, इनको दोबारा continue करना पड़ेगा. But what they can do once they see that this is settling down is then they start promoting. And then again promotion भी आप बड़ी specific करेंगे initially, क्योंकि जिन मुल्कों से लोग आ सकते हैं, जहाँ से फ्लाइट्स आपकी अब हो रही हैं, उन्हीं को आप टारगेट करेंगे ना. आप एक जेनेरिक या बड़ी सी ब्रांडिंग नॉन टारगेटेड नहीं कर सकते. सो इट विल हैव टू स्टार्ट स्मॉल once the situation starts to settle down. It is too early right now to be doing that. थोड़ा सा अभी है इसमें टाइम. So yeah. Okay, so I want you to give one last message for the people out there
regarding the coronavirus situation as well as so that they are encouraged to for tourism after the situation is over, especially the locals. ठीक हो गया. So yeah, so I being a mountaineer, I travel a lot, but पिछले 6-7 हफ्तों से I've been pretty much lockdown में घर और अपनी community से बहुत कोई काम हो तो बाहर निकला हूँ, and I've practiced social distancing. I myself wear a mask when I go out in public if I have to. तो अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि if you don't really have to, don't go out. Stay home and stay safe. Baki, once the situation does settle down and you do get to go to these beautiful places, Hunza jaएं, Punjab jaएं, Skardu jaएं, Shikar jaएं, Khaplu जाएं, और डाउन साउथ जाएं जब मौसम अच्छा हो जाने के लिए. Like I went to Cholistan in February and I really loved it. The way those things are. द्रावर फोर्ट है और चोलिस्तान रैली हो रही थी, और भावलपुर बड़ा खूबसूरत शहर है, मतलब आर्किटेक्चरल मार्बल्स हैं वहाँ पे. अब ये सारी खूबसूरत जगह. Go explore, see your country. बलूचिस्तान जाए. But the only thing that I would say is कि खुदारा वहाँ जाके गंद ना डालें. We as a nation need to learn this. हमने हुंजा का बेड़ा गर्क किया, हमने नारान का बेड़ा गर्क किया, हमने सैफल बलूक की मत मार दी है. We need to be very very careful with the things we have. हम वहाँ जाते हैं तो हम अपना कूड़ा साथ वापस लेके हैं, वहाँ गंद डाल के मत आए. मेरे एक मेंटोर हैं आफ्ताब राना. He's into sustainable development organization and he has done a lot for tourism in Pakistan, for conservation he's done a lot. What he says is that when you go to some place, take only photographs and leave only footsteps and bring back only photographs. Yeah. Thank you so much. This was all the questions I had. Thank you so much for giving me time. I don't think so I've done a very good job because I'm not very confident in front of camera, but thank you so much. You're most welcome. You've done a good job listening to me. Thank you. Good luck with the research and with the project. And it was lovely being live in this session with you. So maybe we could do this more often. Yeah, we can do. Okay. Allah Hafiz. Thank you.